सपोर्टेड बाय स्याग एवं पुल की ट्रेंडिंग कंपनी। जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। मेरे दोस्त, एक ही तो जिंदगी मिली है, इसे अपने ढंग में जियो। वीडियो में बने रहिए, थोड़ा ज्ञान और फिर आगे बढ़ते हैं। सभी के ख्वाब अलग अलग होते हैं, तो मेरे भी 3 साल का एक छोटा सा ख्वाब जो पाने के लिए आज निकल रहा हूँ, लद्दाख। लद्दाख एक ऐसी जगह जैसे हिंदुओं के लिए हरिद्वार तो मुस्लिमों के लिए मक्का मदीना है, लेकिन लद्दाख जर्नी तो सभी धर्मों के लिए आकर्षक जगह है। आप देखेंगे वहाँ 60% से अधिक लोग फॉरेनर मिलेंगे। लद्दाख के लिए 3 रास्ते चुन सकते हैं। पहला, जहाँ भी हो वहीं से मेरी तरह बाइक लेके निकलो। दूसरा, फ्लाइट लेके सीधा लेह पहुँचो। तीसरा, मनाली या श्रीनगर जाकर वहीं से किराए की गाड़ी या बाइक बुक करो। 11 अगस्त 2019 सुबह के 4:30 मेरे ख्वाब का सफ़र अभी शुरू हुआ, तो चलिए आपको भी साथ लिए चलते हैं। 50 किलोमीटर बाद पहला स्टॉप चाय के लिए नागौर में लिया और अभी राइड कंटिन्यू करते हैं। देखते ही देखते सूर्योदय हो रहा है। Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. ये एक छोटा सा ब्रेक 100 किलोमीटर बाद हो रही हमारी पीछे बाइक जो भी छोड़ी हुई। घर पे बात की तो अब चलते हैं आगे और भी बातें करते रहेंगे। Birds chirping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah. अभी सड़क अच्छी है तो 80 to 85 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से गाड़ी मक्खन चल रही है। बाइक वाला भी मेरे साथ साथ बराबरी कर रहा है, आप देख रहे होंगे। तो भाई चलो बराबरी तोरी राइड में करते हैं, आओ लद्दाख ले चलते हैं। तो इस राइड का मुख्य लक्ष्य एक छोटा सा मैसेज है, पेड़ लगाओ जीवन बचाओ। आपको पता होगा मैंने पेड़ लगाकर ही यात्रा शुरू की, पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा। मेरे जैसे अब दूसरे हजारों युवाओं की जरूरत है ऐसे मैसेज के द्वारा जनता तक पहुंचाना, क्योंकि अभी अमेजन जैसे वन जिसे पृथ्वी के फेफड़ों कहा जाता है, वहां पर लगी भीषण आग के कारण हुई हानि को वापस संतुलन के लिए समय लगेगा। मेरी छोटी सी विनती, आप भी एक पेड़ जरूर लगाएं। Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. अभी 100 किलोमीटर बाद ये दूसरा स्टॉप लिया मैंने और हमारे ये भैया मिले साथ में भी, यहाँ पास नहीं। अभी भैया मिले राजू चौधरी जो यहाँ फतेहपुर से थे। Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah. हमारे वहाँ तो रामदेव जी के भक्तों का आवागमन है, तो यहाँ पर ज्यादा सर जाने वाले को यहाँ जगह जगह आपको जाते हुए देख जाएंगे। ये इस तरह कावड़ यात्रा वाले Searching for a longer day.
just come. We must never stop the way. Birds jumping and I hear my name, grasping into अभी आप पीछे बैठ के थोड़ा क्या नाश्ता नमकीन और बिस्कुट साथ में life था। is happy but it's so और ये रही हमारी बाइक। insane. We चलो अब must चलते हैं। really make a शुरू से 50 किलोमीटर आगे आया हूँ। Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah. राजस्थान को छोड़कर हरियाणा में एंट्री के लिए, तो हरियाणा में आते ये 4 लाइन आ गई, अब तक 2 लाइन थी। The lion's gonna come. The birds have just begun. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back to when we were young. For the animals we stand. Let's go back to when trees were swung. Kids across the land. ये रेत के टीले ऐसे ही हैं और इस तरफ भी ये। Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. ये पीछे देख रहे जो इंदिरा गांधी नहर, इसके ऊपर ये पुल बन रहा है। 1-2 इंस्टाग्राम के लिए पिक्चर क्लिक की है अभी। Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds jumping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a strive. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah. तो फ्रेंड्स मैं रूम में पहुंच चुका हूं और आपको थोड़ा सा रूम टूर दे देता हूं। ये रूम, टीवी लगा हुआ है और ये बेड और फैन, ये सामान अब रख दिया है। ये टॉयलेट, अभी मैं डेटा ट्रांसफ़र कर रहा हूँ जो आज का वीडियो बना और लैपटॉप में। उसके बाद में वो मीरा भाई मंदिर वाला ये वीडियो अपलोड करूँगा। उसके बाद में सुबह और सुबह से कल की जर्नी शुरू करेंगे। कल जहाँ तक संभव होगा हम श्रीनगर पहुँचने की कोशिश करेंगे, जो 500 से 550 किलोमीटर है यहाँ से लगभग। फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये आज का वीडियो पसंद आया होगा और
पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। जर्नी अभी तो पूरी बाकी है। कल वाले वीडियो में काफ़ी मज़ा आएगा क्योंकि इससे हम जम्मू में एंटर कर लेंगे। कल जल्दी मिलेंगे अगले व्लॉग में। जय हिंद, वंदे मातरम।